Activators also recruit nucleosome modifiers. So, in addition to direct recruitment of the transcriptional machinery, recruitment of nucleosome modifiers can help activate a gene packaged within the chromatin. तो जैसे आप जानते हैं कि यूकैरियोट्स में क्रोमेटिन होता है और क्रोमेटिन के अंदर जो है जीन जो है वो ज़ाहिर है वाउंड होता है, ओपन तो बिल्कुल एक्सपोज तो नहीं होता. तो इसका मतलब है कि किसी जीन को जो कि न्यूक्लियोसोम के उसके अंदर क्रोमेटिन के अंदर है उसको एक्टिवेट करने के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर भी चाहिए. तो ये जो एक्टिवेटर्स हैं ये न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स को भी रिक्रूट करते हैं. न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स come in two types. First, those that add chemical groups to the tails of histones such as histone acetyl transferases which add acetyl groups. तो ये जो हैं एक तरह के ये जो हैं ये इस तरह के हैं कि ये हिस्टोन प्रोटीन्स की टेल्स में एसिटाइल ग्रुप्स जो हैं वो ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स. तो इस तरह से ये उनको मॉडिफाई करते हैं. सो दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम मॉडिफायर्स. और सेकंड जो हैं सेकंड आर दोज दैट डिस्प्लेस और रीमॉडल द न्यूक्लियोसोम्स एंड दीज इंक्लूड ATP डिपेंडेंट activity of SWI/SNF. How do these modifications help activate a gene? कि न्यूक्लियोसोम तो मॉडिफाई हो रहा है, रीमॉडल हो रहा है या उसकी डेरिवेटाइजेशन हो रही है, एसिटाइल ग्रुप लग रहा है, लेकिन ये एसिटाइल ग्रुप लगने से या इसके रीमॉडल होने से जीन कैसे एक्टिवेट होगा? Let us see that. Two basic models explain how changes in nucleosomes can help the transcriptional machinery bind at the promoter. First of that includes remodeling, and certain modifications can uncover DNA binding sites that would otherwise remain inaccessible within the nucleosome. तो एक तो इसमें ये है कि न्यूक्लियोसोम के अंदर कुछ डीएनए के ऐसे पोर्शंस हैं विच आर कॉल्ड डीएनए बाइंडिंग साइट्स. तो ये जो मॉडिफायर्स हैं ये डीएनए बाइंडिंग साइट्स को ओपन करते हैं ताकि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं या कुछ और फैक्टर्स हैं वो यहाँ आके बाइंड कर सकें. फॉर एग्जांपल, बाय रिमूविंग और इंक्रीजिंग द मोबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, रीमॉडलर्स आर प्रपोज्ड to free up binding sites for regulators and for the transcriptional machinery. Similarly, the addition of acetyl groups to histone tails alters the interactions between those tails and adjacent nucleosomes. तो उन न्यूक्लियोसोम्स के और एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान में इंटरेक्शन होते हैं. तो अगर आप एक न्यूक्लियोसोम के टेल में एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देंगे तो ये न्यूक्लियोसोम का दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ इंटरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और देयर आर चांसेस के जो डीएनए बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाएं, फ्री अप हो जाएं. दिस मॉडिफिकेशन इज़ ऑफन सेड टू लूजन क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, thus freeing up the sites. But adding acetyl group also helps binding of the transcriptional machinery in another way. It creates specific binding sites on nucleosomes for proteins bearing so-called bromodomains. One component of the TF2D complex bears bromodomains and thus binds to the acetylated nucleosomes better than the unacetylated nucleosomes. Thus, a gene bearing acetylated nucleosomes at its promoter will likely to have a higher affinity for the transcriptional machinery than one with unacetylated nucleosomes. तो promoter की साइट पे अगर acetylated न्यूक्लियोसोम्स हैं
तो वो ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी के लिए ज़्यादा एफिनिटी शो करेंगे और ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंसी से वहाँ रिक्रूट हो सकती है. Other proteins contain chromodomains. These recognize methylated nucleosomes, examples of which we will encounter later. So one is acetylated, the other one is methylated nucleosomes. Some components of the transcriptional machinery are more stringently required at some genes than at others, and the same applies to nucleosome modifiers as well. Thus, although all genes absolutely require RNA polymerase itself, a given gene may depend on another particular component of the transcriptional machinery or a nucleosome modifier, or it may not. In addition, what is needed to activate a given gene can vary depending on circumstances such as the stage of the cell cycle. तो different stage cell cycles जो हैं वो भी determine करेंगे कि what is needed to activate the gene. For example, GAL4 usually activates the GAL1 gene efficiently in the absence of a histone acetylase. During mitosis, however, when chromatin is more condensed, activation is eliminated unless that acetylase is recruited to the gene. तो माइटोसिस में आप जानते हैं जो क्रोमेटिन है वो ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, तो वहाँ पे जो है वो जीन एक्टिवेशन जो है वो ख़त्म कर दी जाती है अनलेस के वहाँ पे एसिटाइलेज जो है वो रिक्रूट किया जाए. In yeast, recent experiments have provided good evidence for particular activator target interaction at the specific genes. The acidic activator GCN4 is known to interact with GAL1. It also interacts with the TAF12 subunit of TF2D complex and other complexes involved in the transcription, including the nucleosome remodeler SWI/SNF. And GAL4 appears to contact at least 3 components, that is mediator, TF2D, and a third complex called SAGA. The last of these, that is SAGA complex, harbors acetylation activity and seems to be capable of interacting with the transcriptional machinery as well. तो इसमें दो चीज़ें हैं, यानी कि acetylation activity भी है और ये transcriptional machinery के साथ interact भी कर सकता है. The ability of an acidic activator such as GAL4 to work at genes with different requirements can be explained by its ability to interact with multiple targets.